Is everyone present? Yes, ma'am, we can start now. Yeah, can I start? Yes, ma'am, please. Okay. Good afternoon, everyone. I'm Rashmi. I stay in Muscat, and over here it's around 10:36 over here. And good afternoon to you all. Good morning to me. So today here I'll be talking on the balanced meal. Actually, it's a holistic style of living. And let me tell you about holistic style of living. Holistic living lifestyle is nothing but an individual's mental and health, physical health together. Yeah. So for that, there are some points which I'll be talking, and then we will go on the balanced meal. Yeah. Let me tell you something. Like, we cannot, by the holistic living, you can't treat a person. You can't treat a person, okay? But you can definitely take care of the symptoms. You can usually reduce the symptoms of your illness. Yeah. So what are the things which you can do? The first thing is, let me tell you, you learn to eat and enjoy the real food. Real food, what I mean is, which comes from the earth, yeah, which is not packed, which is not at all packed, and which is not processed. So what I mean is the plant-based food, even the non-vegetarians, it is a real-based food. But I'm like, if it is a non-veg, I'm not talking about the sausages or the ham or salami, but I'm talking about the chicken, the eggs, these things. And if it is the vegetarian, it should be a plant-based. Okay, so this you should eat. And definitely, let us talk about mental health. Mental health is something you have to be very positive. At our age, we have to be very, very positive, because we all know that we had our days and it's all gone. And now we are at the retired stage where we need to be very positive. Sometimes we have some problems, might be the illness, might be some mental problem, might be some home problems. Yeah. But we need to be strong. We need to be positive. We are not going to increase our age by all means, but we are going to remain positive and healthy by staying like that. So what do you mean by positive? Positive is like meeting your friends every day, going for a walk, and then talking to them. If you cannot, you're at home, you cannot walk. There are some people who cannot now go out and walk. Well, you can talk on the phone. Yes. And you can listen to whatever you like, listen to the songs, listen to the stories, to watch the movies. This is the passive way of keeping yourself positive. And let's say, what else? Keep calling your kids. If they are not with you, keep calling your kids. Talk to them when they are free. Yes. And keep it positive in a way with the kids, like you are not putting yourself in the middle unless and until they are asking for. So you have to be very careful with that you keep the relations with your kids very well. So that is the positive living. Even if you have kids around, if you're staying in a building and if you have kids around, call them. If you know something like a shloka or something, teach them for a while, half an hour. That will give you happiness. Yeah. So that is the positive way of living. And now exercise, you need to do some physical exercise, some movement. Let's say, okay, who is healthy can go ahead and do the exercise, go walking, go swimming, maybe some gym. People can go for gym, everything. But those who are at home and cannot walk, what can they do? Or cannot walk, in a sense, there is a limitations. So what can one do? You can always do
some exercises. Sitting on the chair, simple. Standing back, again sitting on the chair, simple thing, simple thing. That is a movement. Stretching your arms, stretching your legs, stretching from side to side. That is also very important. If not this, you are sleeping on the bed, okay? You're lazy, I'm lazy too. So you're sleeping on the bed, and what you can do is, whatever exercises are done by standing, like arms, you pick up your arms, you do the exercise for biceps, forceps, you do your leg stretches, everything. You're sleeping on your back and you're doing the same thing, but lying on the bed. So that also gives a good impact. If you're not walking and you're sleeping, just move your leg as if you're walking. That is a very good way of keeping you motivated and keeping you active. Okay. So now the other thing is, let's talk about healthy food, where I'll come again. Healthy food now is like, we all know, we are Indians, so we all know we have actually in our diet a very, very balanced meal. Let's say roti hai, millet ki roti hai, gehu ki roti hai, then there is a dosa or something like that, then there is a rice, there is dal, there are pulses which are sprouted, and there are vegetables, there is a salad or a raita, whatever you all can say. Sab hai. We all have everything, but with the time, with the fast food outside, with the restaurant, with the money coming in, we are forgetting our regular meal, basically. So let me talk about what should be in your meal, like every day. Every day, what you should have in your meal is carbohydrates, fats, proteins, and fiber. Yeah. So carbohydrates, in carbohydrates, everything comes. Roti rahi, millet ki roti rahi, ki millet ki roti like jawar, bajra hai, ragi hai, jo bhi hai, we all know everything. वो होनी चाहिए. And fats में, fats में, we are in India, we should eat local. So let's not talk about avocados and all those things. Over here in India, हमारे पास pure घी है. Okay? घी से डरना नहीं है. घी अच्छी चीज है. जो homemade घी है, वो सबसे अच्छी है. Like homemade घी भी like क्रीम से बनाई हुई नहीं, बट दूध को उबाला, फिर दूध को फ्रिज में रखा, क्रीम को निकाला, क्रीम को हमने दही लगाई जो पुराना स्टाइल है, और फिर उसको चर्न करके जो बटर निकलता है, बटर से जो घी निकलता है, दैट इज अ गुड घी. ओके, सो यू कैन यूज दैट फैट. You can, in oils, our parents and our grandparents never used filtered oil. ये फिल्टर्ड ऑयल आया मार्केट में, उनकी स्ट्रेटेजी थी, उन्होंने बेचा है, एंड वी ऑल हम लोग उसमें एक बकरे हो गए. बट वी शुड लीव दैट एंड वी शुड स्टार्ट यूजिंग कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स. सो एंड वी गेट इजीली अवेलेबल है मार्केट में या ऑनलाइन है. वी इजीली get access to that. Now, which oils should we use? इंडिया के हर एक प्रांत में अलग अलग ऑयल यूज किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन जो वहां फार्मिंग होती है, एंड अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट. ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट मुंबई. मुंबई में पीनट ऑयल यूज किया जाता है. मुंबई में तिल का ऑयल यूज किया जाता है. डाउन साउथ दे यूज कोकोनट ऑयल एंड सेसमी ऑयल. Top north, they use sarson tel. So which is right? You can use it, but keep on changing the. अगर आप रेस्टोरेंट का खाना खा सकते हैं, तो why not use a different oil also? ऐसा नहीं होता है कि the north वाला से कि oh the coconut oil अच्छा नहीं लगता है, या the south person says कि सरसों का तेल को एक जो स्मेल है वो पसंद नहीं करते.
try to use all the different type of oils and different type of foods when you're cooking. Okay, so other fat is, this is the oil which I have talked. The other fat is let's say जो peanuts है, peanuts है, उसमें fat है, cashew nuts, all the nuts have fats and proteins. So here we are talking about at present fats, तो वो आप खा सकते हैं, limitations रहे. अगर आपको, if you have allergy, then you have to work on it, because see, sitting here I won't be knowing what allergy you have. So you should try and eat, or if you already know, तो वो nut छोड़ के you can always eat that. Now other fat is olive oil. Olive oil is also, it India का नहीं है, but it is freely available and it is oil, so it is not that seasonal है या ऐसे कुछ है. Oil हमारा भी जो cold pressed है, it is also packed. So olive oil also you can use, but olive oil cannot be heated. वो हाई टेम्परेचर पे हीट हुआ तो उसकी जो अच्छी प्रॉपर्टीज है वो खत्म हो जाती है. सो इट कैन बी यूज्ड इन सैलड्स. Okay, and our oils can be used for cooking. Now I covered the grains, I covered the fats. Let me talk about the lentil and pulses. So lentil and pulses हमारी 3 टाइप के होती हैं. पूरी छिलका निकाली हुई दाल है, ओके. दूसरे हैं छिलके के साथ दाल जो है, एंड तीसरा है जो पल्स है वो पूरे साबुत है. सो ऑल दीज आर very important because not only vitamins and minerals, proteins are also there. Vegetarian लोगों के लिए it is very important to eat it every day. Now it depends which dal or which pulse your body accepts. अगर तूर दाल, if someone is having uric acid problem, तो try to avoid tur dal and stick to moong dal or masoor dal. Okay, so and now let's talk, let's say अगर आप whole pulses की बात कर रहे हैं, तो whole pulses 8 घंटे भिगोए, बहुत से लोग 8 घंटे 12 घंटे भिगाए और फिर तुरंत कर लेते हैं, but you can sprout them. So let's say if you sprout them, वो हल्का होता है. हमारे एज के लिए वो एक डाइजेशन के लिए हल्का हो जाता है when you are sprouting anything, right? So it is good to sprout and then eat. कच्चा कभी नहीं खाइए. When people say मूंग, sprouted मूंग है वो कच्चा खाइए, या sprouted चना है वो कच्चा खाइए. If you can, you may, but the best thing is हल्का सा स्टीम कीजिए, हल्का सा स्टीम कीजिए. Okay, so that will be more helpful, but sprouted is more helpful. Now दाल्स है, बहुत से लोग क्या करते हैं, आधा घंटा भिगाए और पका दिए, या तो फिर किसी के घर में कुक आती है, she doesn't have time, so what she does is puts the dal, wash कर लिया, कुकर में पका दिया, खत्म. No, you can do something. You can soak the dals for at least 8 hours. So उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है, आपको पचने में वो ज्यादा हल्की हो जाती है. Okay, so dals can also be soaked for at least 8 hours. If you are in a place like where I am, यहाँ पर अभी 50 degree है, तो यहाँ पर still I soak my dals for 8 hours, but चलो यहाँ पर आप 5-6 घंटा भिगा लिए, because बहुत गर्मी है, तो it might stink. Now in the same way, धुली दाल मतलब जिसकी छिलका है उसको भी इसी तरह से करना है. Talking about the pulses, from the pulses, especially the rajma, north में जो है rajma and काबुली चना जो खाते हैं, those people need to soak these 2 pulses at least for 15 hours, at least for 15 hours. Keep on removing the water, again soak it. 15 hours के बाद
उसको next 15 hours अगर आप sprout करना चाहते हो तो sprout कीजिए. If you are not sprouting, then at least soak these 2 pulses for 20 hours. Okay, these 2 pulses for at least 20 hours. So we now, when you are cooking this, we all know हम हींग डालते हैं. Why do we use हींग? हींग डालते हैं because वो फिर से digestion के लिए हल्का हो जाए. So these are the simple things which can be used. We all know, but with the time we have forgotten. Let's talk about the vegetables now. Vegetables and fruits. We should like some fruits and vegetables we have to eat according to the season. Vegetables की बात करते हैं. अगर वो cruciferous है, like cauliflower है, cabbage है, red cabbage है, या दूसरे अपने यहाँ आती नहीं है, वो asparagus वगैरह, I will not talk on that. ये सारी जो vegetables है वो कच्चे कभी नहीं खाए. उसको either steam it और अपनी ढंग से पका के खाए. जो हमारा स्टाइल है, it is the best style, पका के खाए. Yeah. The other thing is vegetables में try to eat the seasonal vegetable. Especially now, let me tell you, for our age, bhendi rahi. Bhendi you should at least eat twice or thrice a week. Even if you don't like it, try to eat, because bhendi helps अपने diabetes के levels को level पे रखने के लिए help करता है. Even you can use bhendi, like let's say 3 और 4 ले लिए, उसको बीच में से slit कर दीजिए, रात को glass में पानी ले लीजिए, पीने के पानी उसमें डाल दीजिए. Next day it will become little slimy. Don't worry about it. We are not going to worry about अब कैसे लग रहा है taste. Yeah, taste is important, but our health is more important. So just drink that water, empty stomach. That is very helpful. Yeah. Okay. Now, other vegetable is there are some vegetables. Potato से हम डरते हैं, डरना चाहिए, but it is how we cook the vegetable, how we cook the potato vegetable. ऐसा नहीं कि उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया, जीरा आलू कर लिया, ये कर लिया, अच्छी बात है, खा लो उसको. When it is cooked, you have to eat. But potato has a very nice property when it is boiled, cooled, and ठंडा not in a sense fridge का, but a room temperature. आप उसको दिन में एक छोटी सी कटोरी आप खाएं, 5-6 पीसेस आप खा लिए, आधा पोटैटो खा लिए. I'll tell you later why. दूसरी एक सब्जी है कच्चा केला. कच्चा केला, even again, you should try to eat daily. आप उसकी सब्जी बनाइए. शायद पका हुआ केला I won't suggest you to eat, but कच्चा केला you should eat, because कच्चा केला also helps in something. You cook as a vegetable, एक अलग अलग vegetable बनाते जाओ, लेकिन कच्चा केला रोज के खाने में अगर आप रखे तो it is very nice. Yeah. So ये हुए. और कोई vegetables है जो helpful है? Spinach, पत्ते वाली सब्जी, all are helpful, but be careful, because when it is rainy season, you have to be very careful with the leafy vegetables, because कीड़े हो सकते हैं. If you don't wash properly, तो वो कीड़े हो सकते हैं, कितने भी wash करो. So remember one thing, कि अगर सब्जियों को और फलों को अगर बस धो लिया, खा लिया, ऐसा नहीं है. Keep it in the water for half an hour, then wash it properly, and then vegetable है तो कट करके कुक कर दीजिए, और fruit है तो खा लीजिए कट करके. Yeah. So पत्ता सब्जी है, especially spinach है, लाल वाला माठ, in Marathi we call it माठ, वो है, या any leafy vegetable you should add, because spinach especially जो है वो vegetarians के लिए प्रोटीन का काम करता है, you know, प्रोटीन उसमें से मिलता है. Now mushrooms, simple button mushrooms, don't go for the fancy mushrooms. All the mushrooms will have the same properties. So mushrooms, simple mushrooms. If you are lacking in protein, try to make
शाम को मशरूम सूप, या तो फिर ब्रोकली आजकल मिल जाती है, ब्रोकली सूप, या तो फिर स्पिनच सूप बनाइए, या स्पिनच एंड काला चना है उसका सूप बनाइए. यू कैन मिक्स इट. Okay, you can make soups out of this. If you like, these are the leafy vegetables. Now quantity I will tell you later how much to eat. Okay, so now ye fiber kahan se aaya? Now the fiber is in what you are eating. Fiber is in grains, fiber is in dals and pulses, fiber is in vegetables. And if you are still lacking with the fiber and you have some constipation problem with the age ho jata hai, so what you can do is you can use psyllium. इसबगोल जो आता है वो, अब इसबगोल कैसे लेते हैं उसमें भी फर्क है. नाउ इसबगोल अगर आप ले रहे हैं शाम को, तो remember, if you are using for constipation, use 2 teaspoons in a warm water, gulp it up immediately. That will be very helpful. Yeah. तो ये हुआ खाना. Now, how do you have your particular day? How should it look? How should it look? I don't know how आपका दिन कैसे होता है. मे बी सुबह की चाय या कॉफी. डाउन साउथ कॉफी से शुरू होता है, हम सब ऊपर चाय पीते हैं. Let's stop that. Okay. आप बोलेंगे हमने तो लाइफ में पूरे टाइम हमेशा ही चाय से शुरुआत की है, अब क्यों? But then you might be having some problem. You might tell me that नहीं, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है. But if you are diabetic, if you have a cholesterol problem, if you have a kidney stone, if you have any other problem, it is because you have a gut problem. Gut problem मतलब digestive system. तो इसका मतलब you have to change your habits because of your age also. एक उम्र होती है तब में भी सब कुछ चल जाता है, but not after particular age. You have to be careful. Even the kids have to be careful now, I would say. But let's talk. We are talking with ourselves, so I think we have to change us. Now, let me tell you what is my particular day. Every day is a routine. I don't mind this, and weekend I cheat. Okay, so because तो वो boring हो जाता है, so you need to cheat one day, once in a week. So my particular day starts. I do my intermittent fasting. I am very poor in intermittent fasting because when I drink water, I need something to eat. So in 5 days of the week, I do my dry fasting. No water for almost 16 hours dry fasting. Uske baad I first take is कटोरी गैस पे रखी हुई रहती, एवरीथिंग इज रेडी. कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी पानी पीना है तो जल्दी में कुछ करना है तो आज के दिन घी छोड़ दो, वॉट एवर माई रूटीन इज छोड़ दो. नहीं, आई कीप एवरीथिंग रेडी ऑन माई किचन प्लेटफॉर्म. सो what is ready on my kitchen platform? A2 ghee. Invest in A2 ghee. Okay, if you're not making ghee at home. दूध कौन सा आप यूज कर रहे वो भी important है. तो I invest over here because यहाँ पर दूध अच्छा नहीं मिलता है. For the whole day the cow is milking. I don't know how, but it is. And but इसके लिए we get A2 ghee, so I use A2 ghee, organic A2 ghee. There is a katori, then there is a coconut oil, cold pressed coconut oil. There is a lemon juice. हमारे यहाँ lemons अच्छे मिलते हैं, lemon, lime, whatever. Juice तैयार होता है. In other katori, neem के पत्ते. I take 5 neem के पत्ते. I wash it and keep it in the water. Fresh haldi को मैंने क्या किया है, घिस के, grate करके उसमें नींबू का रस डाल के I keep it in the fridge. That's ready. That is out also from the fridge. Okay. Then there are soaked nuts and seeds which are ready. Okay. There are fruits which are ready. Now what I do? Once my dry fasting is over, after 16 hours, first thing I take is I heat my katori
I heat the कटोरी, तुरंत गर्म हो जाती है, बंद कर देते हैं. And उसके बाद अभी तो गर्मी है, the ghee is melted. If it is cold, the ghee solid होता है. तो 1 teaspoon, you just put 1 teaspoon. It will melt out and it will become 1 tablespoon. Okay, so do not fear with the ghee. Please do not. Unless you have been told by the doctors, then ask the doctor. Okay. I put that ghee. Then, since I was a thyroid patient and I was told by Mr. Luke Coutinho to take cold pressed coconut oil, so I put little coconut oil into that and lemon juice. Okay, हर चीज 1 tablespoon होती है. Yeah. Okay, so this is what I drink first. Then I take 1 minute. Uday, 1 minute. Uday. So you can drink that first and then wait for 30 minutes. Okay, wait for 30 minutes. Let it work. Let it pass through. Okay, and then the next what I do is I take those leaves, pani nikal diya. I start chewing them along with a half teaspoon of fresh haldi जो मैंने grate करके रखा है. So neem and haldi should go together. So ये अगर हल्दी नहीं, फ्रेश हल्दी आपके पास नहीं है, तो अच्छी वाली हल्दी पाउडर का भी आप सिर्फ एक गोली बना लीजिए पानी में डाल के और उसके साथ खा लीजिए. chew it properly. अगर पाउडर है तो पाउडर लीजिए, लेकिन अगर नीम के पत्ते मिले तो इट इज मच बेटर. ओके, सो वो ले लेती हूँ मैं. अगेन आई वेट फॉर लेट्स से 15 मिनट्स. आई डोंट माइंड, मुंह कड़वा हो गया, आई रियली डोंट माइंड, बिकॉज एट दिस एज आई हैव टू सी हाउ आई स्टे हेल्दी. So after that, I start drinking my water. Now for me, I first take 1 liter of lukewarm water. आधा लीटर का मेजरिंग मैंने ग्लास ही रखा है, which is very helpful for me, कि I can count मैं कितना पानी पी रही हूँ. मेरे हस्बैंड के लिए भी आधा लीटर का है, तो we know how much we are drinking. He doesn't listen, but then I do follow. Okay, so I take half liter of water, I gulp it up. Okay, I don't take sip by sip. Next half liter is sip by sip, but still I finish in 7 to 10 minutes. So this is done. After that, ये सब करते करते 30 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ये पानी पीते पीते 1 घंटा चले जाता है. उसके बाद I start eating my soaked nuts and seeds. Now I'll talk on what I have soaked. So soaked nuts and seeds mean, since it's easily available here, I soak 3 almonds for me, 5 almonds for my husband, 3 almonds for me, 2 walnuts, half walnuts, that is 1 walnut for each, then 10 raw pistachios. 10 raw pistachios. Okay, 10 raw pistachios जो नमकीन नहीं है, roasted नहीं है, वो वाले. Then pumpkin seeds, 1 to 1.5 teaspoon, because this is my breakfast. Okay, so 1 teaspoon भिगो दिए, फिर sunflower seeds 1 teaspoon भिगो दिए. In this, मेरे कटोरी में 2 Brazil nuts जाते हैं, because I was a thyroid patient. I need selenium more. So I soak 2 Brazil nuts. If you are a thyroid patient, please see how you can, online सब मिलता है, get Brazil nuts. 1 Brazil nut भी enough होता है to fulfill your whole day's selenium. So I soak those 2 selenium. It is very important to soak. Now दूसरी कटोरी में, ये एक कटोरी हो गई. दूसरी कटोरी में नहीं, in my katori there are some extra things which goes. Kale til, 1 teaspoon of kale til and half teaspoon of kalonji. Everything has a great property which I'll not go in detail, but
प्लीज ट्राई टू यूज इट। ये जाता है, आई सोक इट, ओके, पानी भर दिया। दूसरे कटोरीज में 2-2 कटोरी ईच होता है। दूसरे कटोरी में आइदर इंडिया में हो सब्जा सीड्स तो आराम से मिलते हैं, विच इज मच बेटर। सब्जा सीड्स एक्चुअली रात भर भिगाने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू आर यूजिंग चिया सीड्स देन यू हैव टू सोक इट इन द नाइट। इफ यू आर ओके विथ ओट्स, ओट्स ऐसे ही जो डब्बे में आते वो नहीं, इफ यू आर गेटिंग ऑर्गेनिक स्टील कट ओट्स तो ही यूज कीजिए, नहीं तो नहीं यूज कीजिए। बिकॉज आई टेल यू, ओट्स, cold potato, banana, raw banana, which I said, has a special unique quality, which is called resistant starch. उसमें resistant starch है, okay? So resistant starch क्या होता है? हम जब खाना खाते हैं तो वो when you put your meal in your mouth, वहीं से डाइजेशन शुरू होता है। फर्स्ट थिंग इज यहाँ से डाइजेशन शुरू होता है, फिर इट गोज थ्रू द फूड पाइप, स्टमक में एसिड होता है, वो कुछ ब्रेक डाउन करता है, देन इट गोज थ्रू दैट लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन इट गोज टू द ultimately to the large intestine. Okay, now large intestine में there are some bacteria, you know, the good and the bad, both are needed, but sometimes bad bacteria ज्यादा हो जाते हैं, and हम कुछ भी healthy खाते हैं फिर भी we say हम तो सब ठीक खाते हैं लेकिन क्यों नहीं, we are not getting well, तो you have to correct yourself. तो ये जो तीन चीजें हैं are very important, या ये resistant starch है. What do you mean by resistant starch? Resistant starch doesn't get digested in your stomach. The rest of the food gets digested in the stomach, and then it goes through small intestine and large intestine. It goes directly into the large intestine. वहां पर it feeds the good bacteria. It feeds the good bacteria. So क्या हो जाता है कि when it feeds the good bacteria, it helps for the growth of good bacteria. तो ये बहुत जरूरी है, हमको इस उम्र में अब बहुत जरूरी है. So please add in these things. But if you are not getting in hand a good oats, please leave it. आलू तो हमको मिलते हैं, ये भी मिलता है, रतालू भी मिलता है, वो भी खा सकते हैं. Cold, no warm, cold. And best is raw banana. Banana की सब्जी आप खाइए. Now again coming back to the katori. There are chia seeds, then there is one fig, dry fig जो धागे में आती है, वो एक fig होती है. काला मनुका जो होता है which helps for for the digestion and to pass the stools, which is very important our age. तो वो काले मनु के let's say 2 teaspoons या 1 teaspoon, it depends on if you're diabetic, take little, कम ले लो. Okay, I am not, so I use the whole teaspoon. Maybe those अगर count किए तो 10 होते होंगे, तो 10 काला मनु का हो गया. उसमें I have added, and then I add water in this also. Now these are soaked overnight. Now from this the chia seeds swells. आपके basil seeds भी वो भी फूलेंगे अगर रात भर भिगोए थे, बट उनको रात भर भिगोने की जरूरत नहीं. आप ये तीनों चीजें भिगाइए एंड देन नेक्स्ट डे आप उसी में थोड़ा सा पानी डाल के आप बेसिल लीव्स आप भिगा दीजिए, वो तुरंत फूल जाते हैं. इट इज वेरी नाइस. ओके, सो इसमें से दूसरी जो कटोरी है जो जिसमें आपने नट्स भिगाए हैं और उसमें सीड्स भी कुछ है, जो है तिल है, देन कलौंजी है, pumpkin seeds से एंड sunflower seeds से. अगर आपको इसमें से नहीं मिलता है तो आप मगज भी ले लीजिए, उसको सोक कर दीजिए. लेकिन इनको, ये कटोरी को आपको धोना है 2-3 पानी से, या चाय की जो छलनी होती है स्ट्रेनर से उसमें डाल दीजिए अच्छी तरह से 2-3 पानी में. उसको जो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, तो इसमें भी न्यूट्रिएंट्स बुरे होते हैं, इसीलिए दाल को भी हमने भिगाया है, उसमें भी बुरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सोक करके धो के चले जाते हैं. इट गेट्स वॉश्ड ऑफ, सो व्हाट इज लेफ्ट इज द गुड न्यूट्रिएंट्स. तो इसको भी आप धो लीजिए. फिर इसको मैं खा लेती हूँ बिफोर द फ्रूट्स.
First thing I had the ghee, and then after some time I had the neem and haldi. Uske baad pani. After some time, pani. Okay. Uske baad that is what I do. I mean, breakfast time nahi hota hai. I stay alone, so breakfast is not a time for me. I'm not sick. If you are sick, if your doctor has told you to eat breakfast, please eat it. But I'll tell you later. Ab iske baad, I just mix these two things. They taste very tasty. And again, I told you that do not think of how the taste is. Please eat for your health. Now eat this, okay? And uske baad aapko fruit khana hai. Iske baad aapko fruit khana hai. Fruits, let's say you eat only one fruit. There is a combination. Any fruit के साथ, किसी भी fruit के साथ नहीं चलता है. So remember, first thing is the seasonal fruit. अगर गर्मी है तो आपने ले लिया the watermelon ले लिया, या any other melon आपने ले लिया. आम का सीजन है, आम खा लीजिए, कुछ भी है. And otherwise, अगर कश्मीर से एप्पल आता है तब तक ठीक है, अमेरिकन एप्पल बहुत दूर से ट्रैवल करता है तो वो ठीक है. जो भी है, पपाया है, पाइनएप्पल है, जो भी आपके यहाँ आता है जो फ्रेश है वो आप खा लीजिए. बट one fruit. इसके बाद I am full because the fruits, nuts, seeds and are enough for me. Okay. अगर आपको फिर भी आप भूखे हैं तो maybe after an hour you can eat something. Okay, but then I don't. I'm talking about my day. So इसके बाद let's say अब 16 घंटे हो गए इसको, अब मैंने खा के 18 घंटे हो गए. 18 घंटे के बाद after my fruit I need my coffee. Now I avoid milk. Everyone should avoid milk unless you know the source of the milk. Okay, milk, अगर गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा भी नहीं पीता आफ्टर सर्टेन एज, तो हमको क्या जरूरत है? जो पहले बोलते थे मिल्क कैल्शियम लाता है. My father-in-law was a doctor. He was a dean of Sassoon Medical College and BJ Medical College, Sassoon Hospital, Pune. He used to take milk, chas, dahi, but then his bones were still at the end very, very fragile. Why? Because the milk which come in packet is a processed milk. वो कब पैक हुआ है? So you don't know about it. So best thing is, if you can avoid milk, it is best, and you will see the results. You will see the results. Okay. Now you'll say, चाय कैसे पिए? तो आप make it a habit without milk, या तो फिर plant-based milk बनाते जाइए, like almond milk है, या काजू है, या peanut milk है, या ऐसे कुछ milk बना के आप अपने लिए रखते जाइए, उसमें से आप उसको डाल दीजिए और बनाते जाइए. But what I need is my black coffee. Now I take my black coffee, simple coffee होती है, उसमें इलायची थोड़े से डालती हूँ, because then I shouldn't get my acidity. इलायची, herbs and spices are very useful. उसको आप use करते जाइए, moderately but use करते जाइए. Okay, so this is what is done. After this, it's evening. So it's evening, then we have our dinner. I actually have only one meal in a day. So proper khana. So मेरा खाना शाम को 6 बजे होता है. Before that, what I do is 40-45 पानी पीना शुरू होता है. पानी पीना 3 लीटर्स पानी में पीती हूँ. जो पानी शुरू होता है, जो 1 लीटर मैंने पहले पिया, उसके बाद गैप बाय गैप पानी पीती ही रहती हूँ. After you eat anything, please see that you at least take half an hour gap to drink water. Okay, because उसको digest होने दीजिए, पानी से नीचे ना ढकेलिए. Okay, then पानी में पीती रहती हूँ. Before my dinner, what I do is there is something called ACV in the market, apple cider vinegar. Apple cider vinegar दो तरह के आते हैं. एक जैसे ऑयल आता है, रिफाइंड आता है, और एक कोल्ड प्रेस्ड आता है. उसी तरह से एप्पल साइडर विनेगर 2 टाइप के आते हैं. ना 2 टाइप के जो एप्पल साइडर विनेगर है, उसमें I use the mother culture.
जिसमें वो आप अगर बॉटल मार्केट में गए तो वो फॉगी दिखनी चाहिए, क्लियर क्रिस्टल क्लियर पानी नहीं दिखना चाहिए उस बॉटल में, फॉगी होना चाहिए. ओके, सो दैट इज वेरी यूजफुल. उसमें इट्स कॉल्ड मदर कल्चर, सो वो यूज करना चाहिए. नाउ उसको मैं 45 मिनट्स यूज करती हूँ. 45 मिनट्स पहले पानी में आई जस्ट ड्रिंक इट, थोड़े से पानी में आई यूज इट. व्हाई शुड आई यूज इट? बिकॉज इट हेल्प्स फॉर योर एसिडिटी, for your digestion, for your weight loss, for your weight maintenance. We are not here for weight loss or anything. We are using it for the weight maintenance. अब खाना रात का क्या है? खाना रात का, as I told you, grains, pulses, vegetable, and I'm a non-vegetarian person, so week में 3 बार I use we eat non-veg, and 3 बार I'm using, I mean we eat some pulses or dal or anything. Yeah, ये हमारे 6:30 बजे हमारा खाना खत्म हो जाता है. And then after 6:30, 7:30 onwards again I start drinking water. Then up to 9:30, कम से कम शाम को बहुत कम पानी 3 लीटर से बचा है, which I drink. Okay, because I don't want to get up in the night and go to the toilet. Okay, so ये देखना है कि आपको पानी पहले दिन के शुरुआत में ज्यादा पीना है, and दिन शाम के टाइम थोड़ा कम कम पीते जाना है. आपकी दवाई होगी तो उतना पीना है, this that everything. Okay, now so what should be your day? I don't know your day. बिस्किट्स बंद कर दीजिए, मैदा बंद कर दीजिए. If you are diabetic, if you are having cholesterol problem, if you are having heart problem, तो just try for 2 to 3 months. गेहूं बंद कर दीजिए. ओके, गेहूं, wheat, मैदा, रवा सब बंद कर दीजिए. नूडल्स, पास्ता, wherever you are, I mean बंद कर दीजिए. You eat millets. ज्वार की रोटी टेस्ट भी अच्छी है. यू डोंट गो फॉर दैट सॉफ्ट रोटी, क्योंकि इतनी सॉफ्ट अच्छी बनती है तो हमको बहुत अच्छा लगता है, बट जितनी सॉफ्ट है उसमें उतना ग्लूटेन है. यू डू नॉट, ग्लूटेन इंटॉलरेंस नहीं होगा. फिर भी आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू गो इन फॉर मिलेट्स, बिकॉज मिलेट्स में प्रोटीन ज्यादा है और वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होती है. यू विल फुल सटाइटी लेवल जो होती है, सटाइटी लेवल इज लाइक फीलिंग सेटिस्फाइड कि तुमने आपने खाना खा लिया, अच्छी तरह से पेट भर गया, वो ज्यादा देर तक रहती है. ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर. सो यू डू वन थिंग, यू डू दैट. एंड राइस भी है, व्हाइट राइस से ज्यादा है. ये मतलब वो तो हास बेस सब चला ही गया, आजकल कुछ होता रहता ही नहीं है. व्हाई अपने जो पूर्वज थे उन्होंने खाया, they were very healthy, they did not know about anything, and even if they were sick, they did not bother because they lived their life very well. So brown rice use कीजिए, brown rice. If you cannot, brown rice is difficult to digest. If it is difficult to digest for y'all, go for white rice. But now what is the size of the roti, or how much roti and how much rice should you eat in a day? In a day, you can eat 2 fulkas, the palm size. Okay, the palm size. Rice, a katori full of cooked rice. If you're eating white rice, thoda 3/4 kar lijiye. Now, you can always cheat your stomach. आप बोलेंगे 3/4 cooked rice, how will I eat that? सब्जी ज्यादा डालिए, सब्जी ज्यादा डाल दीजिए, दाल ज्यादा डाल दीजिए. Make it a mess, it doesn't matter, make it a mess and eat it, because you should be full. आपका पेट तो भरना चाहिए. So but what you are eating, vegetables and dal, is more healthy. So सटाइटी लेवल एंड सेटिस्फैक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट. तो आप वो खा लीजिए. रोटी के सब आप जब खाते हैं या मिलेट के रोटी के आप खाते हो, तो अनलेस यू आर अ वेजिटेबल लवर एंड यू आर ईटिंग द वेजिटेबल विद द स्पून, you will not eat more vegetable. You will eat only जितनी रोटी में आती है उतने ही खाओगे. तो important is remember that
Now, I told you roti kitni honi chahiye and chawal kitna hona chahiye. Now, fruits and vegetables din mein kitne hone chahiye? Remember 6, 5 to 7. According to your age, according to your digestion, servings hone chahiye. What do you mean by servings? Serving is जो नॉर्मल कटोरी होती है, जो मेजरिंग कप होते हैं, केक बनाते हैं तब जो मेजरिंग कप होता है, दैट इज अ सर्विंग साइज. ओके, सो उतनी खानी चाहिए ना. उसमें से फ्रूट्स हो गए हैं 2 कटोरी, तो इसीलिए आपको फ्रूट्स 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 फ्रूट्स आप खा लिए. एक साथ एक ही फ्रूट खा लिए, उसके बाद बीच में कभी खाइए. बट I would suggest you all to eat the fruit in the empty stomach and not after you have started eating everything. Please do not. I would suggest. Okay. But up vegetables, bacha hai vegetables. Ab vegetables, let's say you're eating 6 portions. Okay, मैंने 5 to 7 बोला. 6 portions. 6 portions में से 2 portions fruits में चले गए, 4 portions रह गए. Keep 2 portions for your salad. हमको सैलेड वेस्टर्न लोगों जैसे भर भर के नहीं खाना है. वी आर नॉट गोइंग टू ईट दैट. हमको किसी ने ये बोला नहीं कि वो रॉ खाए. यू नो, इट इज नॉट राइट. वी आर गोइंग टू कुक एंड ईट. या सो हमको सिर्फ 2 कटोरी सैलेड खाना है. सैलेड रायता के फॉर्म में रहे या तो फिर नॉर्मल सैलेड रहा, उस तरह से आप खाए. नाउ and the rest are the vegetables what you can eat. Now for salad may what I would suggest you all is you all can add cucumber. Acidity बढ़ती है, right? Acidity बढ़ती है, but let me tell you, it is not the acidity. एक उम्र के बाद acid कम होता है. The symptoms are same, but it is not the acidity. यहाँ जलन ये वो सब वही होता है, but it is not the acidity. It is the less acidity we have in the stomach. So we need little more extra acid. And ACV, which I told you, the apple cider vinegar will help you both ways. Even if you have acidity, even if you have less acidity, acid in your stomach, it will help you to balance. It is very important. Invest in that. एक bottle में invest करोगे बहुत दिन चलता है. Yeah. So please invest in that. Please invest in A2 ghee also and cold pressed oils. Now salads में रहा तो salads में carrot is very important. Carrot अगर your teeth are not cooperative with the age, उसको grate कर लीजिए. Carrot को when you grate, do not eat immediately. It has to be exposed. It has to get oxidized. उसकी value बढ़ती है. So remember कि carrot को हमेशा काट के या ग्रेट करके थोड़ी देर रखिए. आपको किसी ने बोला ही होगा कि अगर कोलेस्ट्रॉल है तो लहसुन खा लीजिए, लेकिन लहसुन को सिर्फ छील लिया और गल्प कर लिया या तो फिर तुरंत चबा लिया, नहीं. लहसुन को भी आप थोड़ा सा आइदर क्रश इट या तो फिर काटिए, एक्सपोज इट फॉर 15 मिनट्स. उसकी प्रॉपर्टी बढ़ती है और फिर आप पानी से निगल लीजिए, उसमें कुछ नहीं. Now salad, coming back to salad, carrot हो गया. Tomatoes are not useful if you're eating raw. Okay, tomatoes are not useful when you're eating raw. Tomatoes slightly cooked, you know, रोटी हो गई, बन गई, उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया, आधा आधा बना दिया टमाटो और उसको the cut side down, उसको थोड़ा सा चार कर लिया, थोड़ा सा, and then you eat it. It is very good for men above 45 because it helps to keep your prostate glands proper. Okay, it's in a huge quantity. You can take the soup also, tomato soup. It should be cooked. Tomato soup hai, tomato cut tomatoes hai, it should be eaten. Tomato khana chahiye. Okay, and ladies, it's good for your skin. Okay, so tomato is तरह से खाना चाहिए. Cucumber is alkaline. तो क्यूकम्बर खाइए, थोड़ा थोड़ा पोर्शन खाइए. हमको 2 ही कप खाने हैं दिन में, तो थोड़ा थोड़ा खाइए. बेस्ट इज, एज आई टोल्ड यू, गार्लिक एंड जिंजर खाना ही चाहिए, सबको मालूम है. आई डिड नॉट टच दैट सब्जेक्ट, बट स्पेशली द ऑनियंस खाइए, बिकॉज आई विल नाउ गो टू प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक.
ऑनियंस आपको खाना चाहिए बिकॉज इट इज अ प्रीबायोटिक. प्रीबायोटिक इज अ फूड फॉर प्रोबायोटिक. ये जो है वो हमारे स्टमक के अंदर सब कुछ बैलेंस रखता है. हम प्रोबायोटिक की हमको गोली देते हैं, इतनी मिलियन इतनी बिलियंस की हम गोलियां लेते हैं. व्हाई शुड यू टेक दैट जब घर में एवरीथिंग इज अवेलेबल. या सो अपना सिंपल ऑनियंस है, आप कट कीजिए, वो खाइए. ओके. अचार है, अचार विच अचार? नॉट फ्रॉम द मार्केट, इट इज फर्मेंटेड, राइट? इट इज फर्मेंटेड, सो इट इज अ फ्रूट फर्मेंटेड. सो अचार जो है जो अच्छे तेल में कोल्ड प्रेस्ड में बनाया है, इट कैन बी सरसों, इट कैन बी तिल का तेल, एनीथिंग घर में बनाया है. यू कैन ईट अचार विद द अचार साइज, नॉट वेजिटेबल साइज, अचार साइज उतना ही खा लीजिए. इट इज अ प्रोबायोटिक, फर्मेंटेड है, इट इज अ प्रोबायोटिक. ओके. तो यू नीड प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक. लेकिन ये आई विल नॉट गो डिटेल इनटू दैट, बट ये सिर्फ आप ऐड कर दीजिए उसमें. नाउ द सिंपल थिंग इज, पुराने जमाने में हम तो भूल गए, हम अच्छा अच्छा खाने लगे हैं, ब्रेड एंड बटर कप खाने लगे हैं. स्टॉप दैट. बट लेट मी टेल यू, पुराने जमाने में बचे हुए राइस की कांजी करते थे. ओके. अभी भी जो पुअर क्लास है वो वही करता है. they don't have bread, they don't have that much money to eat all those things, you know. So what they do is they, मिट्टी के बर्तन ही उनके पास होते हैं. That is one more good thing. Utilize the मिट्टी के बर्तन. I'm not touching that subject, but steel बर्तन, मिट्टी के बर्तन, लोखंड के बर्तन, iron, use that. Okay. No aluminium, no Hindalliums. Okay. So मिट्टी के बर्तन में आपका ठंडा चावल आपने 2 चम्मच आपने उसमें डाल दिया. वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक. आपने उसमें डाल दिया रात को, उसके ऊपर आपने पानी डाल दिया. okay? उसको भिगो दिया, पानी डाल दिया. एंड इफ यू आर इन अ कोल्ड क्लाइमेट प्लेस, जस्ट रैप इट विथ वार्म ब्लैंकेट और एनीथिंग, रख दीजिए, उसको ढक के आप रख दीजिए. नेक्स्ट डे आफ्टर 8 to 12 hours आप जब शुरू करते हैं तो फर्स्ट थिंग इज यू टेक दैट वाटर. नाउ आई डू दिस इन बिटवीन, मैं भी ये करती हूँ. इट इज, ये पानी तो पी लिया, लेकिन ये पानी में अगर आप छोटे शैलेट्स, जो छोटे प्याज आते हैं जो साउथ इंडियंस यूज करते हैं, विच इज मच बेटर देन ऑनियंस. अगर नहीं मिलते तो ऑनियन यूज कर दीजिए, बिकॉज व्हाट डिड आई टेल यू, ऑनियन इज अ प्रीबायोटिक. तो ये जो पानी वो प्रोबायोटिक हो गया, फर्मेंट हुआ. अचार क्या था? प्रोबायोटिक था. तो इसमें आपने प्याज को काट लिया, उसमें डाल दिया. नाउ यू हैव एडेड अ प्रीबायोटिक एंड अ प्रोबायोटिक टुगेदर. अब उसको आप छोंक दीजिए अच्छे प्योर घी में, या साउथ में है तो कोकोनट ऑयल में, आप जिसमें चाहते हैं, अच्छे कोल्ड प्रेस्ड ऑयल या प्योर घी में आप छोंक दीजिए. मस्टर्ड सीड्स, थोड़ी सी मेथी एंड हिंग आप उसमें डाल दीजिए. हरी मिर्च इज ऑल्सो वेरी गुड. को खानी नहीं है, चबानी नहीं है, उसमें सिर्फ जो अर्क निकलता है उतना इनफ है. कड़ी पत्ता डाल दीजिए, उस पर छोक दीजिए. इफ यू हैव अ गुड योगर्ट, please add into it. If I don't have a good yogurt, so I don't use it. Okay, so I put that. Salt, I have Himalayan salt or a rock salt or the sea salt. Stop the normal salt, please. No white, nothing, no should be white. Okay, so ये salt डाल दिया, and you eat this maybe twice a week. breakfast जैसे, या जब आप खा रहे हैं तो उसको ब्रेकफास्ट जैसे, या तो फिर आपको नहीं खाना है तो सिर्फ पानी पी लीजिए, लेकिन वो प्याज खाइए. बिकॉज, और उसको थोड़ी देर रख दीजिए, बिकॉज you have used fat in that. You have the probiotic, you have the prebiotic. Okay, now there are certain people, you know, in Bengal, what they do is, ये कच्चा केला जो है, they make it as a whole meal. You can also make it as a whole meal. कम टाइम लगता है, कम पैसा लगता है, why not, you know. जो कच्चा केला उबाले हैं उसको आप उबाल लीजिए, उसको मैश कर दीजिए, उसमें जो आपको हर्ब स्पाइस जो डालना है उसको एक गोला बना दीजिए. along with that they use fish, तो उसको दे फ्राई द फिश, और या तो फिर आप इसमें आप पीनट्स डाल दीजिए. वेजिटेरियन है तो रात को भिगे हुए पीनट्स.
कच्चे पीनट्स कभी नहीं खाइए, सब कुछ भिगाया हुआ होना चाहिए। तो भिगाए हुए पीनट्स डाल दीजिए उसमें, एंड दे ईट इट as a meal. Do not use curd when you are eating fish. Okay, so you have fiber, you have fat, you have pre-probiotics, you have grain as a rice, and you have protein as a fish, or you have peanuts in it. So you can eat this. This is very healthy. You have to divide your whole week into this. आप ये कब करोगे, एक दिन ये करना है, एक दिन ये करना है, एक दिन वो करना है, yeah? Or you continue with one thing for few days and then continue with the other things for few days. Okay, so this is what I would like to tell you on. Now इसमें एक चीज आती है, I shouldn't be forgetting anything. Did I cover everything? Yeah, now I would like to tell you, milk, you might be having a problem, like आपने बोल दिया milk नहीं पियो, तो it is very good. Milk, आप peanut लो, इंडिया में peanut सस्ते हैं, peanut लो, peanut को रात भर भिगाओ, उसको दूसरे दिन मिक्सर में डाल दो, ओके, एंड उसमें पानी डाल दो, मिल्क निकलेगा, उसको छान लीजिए अच्छी तरह से, कपड़े में से निकाल दीजिए, ओके. Now this milk, you bring it to boiling point and you can use this milk. Cashew हो गया, almond हो गया, and peanut हो गया. All this can be used, okay, for the milk. Now ये plant based milk हो गए. Coconut milk also. Coconut milk उसी तरह से आपको करना है, ग्रेट किया, पानी डाल के उसको निकाल दिया, देन दूध कपड़े में से छान के निकाला, उसको बॉइलिंग लेवल तक लाना है, फिर रख देना है. Now you use this as milk, or the other thing is you can make a curd out of it. Now how do you make? I want to give you this tip. It will be very helpful. Try this out. Curd लगता है, लेकिन you know, I have made a habit of eating this. There is no other go. बच्चे यहाँ नहीं है. Who is going to take care? And why should someone take care? We should take care of ourselves. So this milk, when lukewarm, जैसे आप दूध का दही बनाते हैं, उसी तरह से when this is lukewarm, you just have to, now इसमें कल्चर क्या होगा, ओके, चिलीज जो है, हरी चिलीज, उसके डंठल जो होते हैं, वो उसके ऊपर 3-4 रख दीजिए, एक मिट्टी के बर्तन में आपने ये दूध डाल दिया, वार्म है, जो भी प्लांट बेस्ड है, उस पे आप डंठल के साथ मिर्ची रख दिए और उसको ढक के आप रख दीजिए वार्म प्लेस पे, दही बन जाएगा. जब तक दही नहीं बन रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको वो दही अलग लगेगा, बट यूज इट. आप ये जो राइस मैंने बोला उसमें आप डाल सकते हैं, यूज इट. बट and then on, when you are making the dahi of the plant based dahi, आप हमेशा इसका कल्चर यूज कर सकते हैं. इसको अलग से रख के, जैसे हम दही का कल्चर रखते हैं, पहले वाला दही रख दिया, उसमें डाल दिया, उसी तरह से इस कल्चर को हम यूज कर सकते हैं. Yeah, so you can use that. So this is what I have given you, one recipe, and so now I think this is very simple. And अगर आप travel कर रहे हैं and you cannot follow all these things, okay, so how should you do? किसी के घर में गए हो and आपके सामने थाली आ गई है, okay, so what should you do? You cannot say anything over there. What should you do? Start your food with, पानी तो पी लिया 40-45 मिनट्स बिफोर, उसके पहले नहीं, खाने के पहले नहीं, और खाने के बाद 1 घंटा नहीं, ओके. उसके बाद स्टार्ट योर रॉ, स्टार्ट ईटिंग योर सैलेड, जो भी दिया है उन्होंने, स्टार्ट ईटिंग दैट, ओके. दे विल डेफिनेटली गिव यू, टेल देम टू गिव सम कैरेट और सम ऑनियन तो कम से कम देंगे, तो ईट दैट. देन गो टू योर वेजिटेबल्स, ओके. You know how much vegetables you have to eat. I don't have to repeat it again. You know how much vegetables. So आप सीधा उसमें से कटोरी में से सब्जी खा लीजिए. You can eat like maybe 2 कटोरीज 3 कटोरीज, दिन में 4 खानी है आपको, 2 कटोरी खा लिए. उसके बाद आप दाल पे जाइए, या नॉन वेज है तो चिकन पे जाइए या फिश पे जाइए. You go on that. You finish that.
Now from this you keep little for your carbs, carbohydrates, which you are going to eat. मतलब क्या है, जो रोटी है, किसी भी कोई भी रोटी हो या तो फिर चावल है, उसके साथ जो आपको खाना है, क्या होता है, there are two things. आपने सैलेड खा लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम अलार्म बज गया, it will start working. Raw है, it has started working more. Raw पका हुआ, it's very easy. Raw है, so you know it becomes active. It becomes active. उसके बाद vegetables, हल्का खाना गया, vegetables गए, उसके बाद प्रोटीन गया, उसके बाद कार्ब्स गया. So carbs is the last, and आप कम खाओगे because आपका पेट तब तक भर गया है. So please see that at least you follow this routine when you are with someone. You cannot do anything, do not change. Okay, so this is what it should be. And now I think I'll take the questions. What do you think? Did I cover everything? Or food thoughts bhi maine bataya hai, food bhi maine bataya hai, and herbs and spices definitely use कीजिए. आंखों के लिए, for our eyes, you know, we need something. Cataract हो जाता है. What is cataract? What is calcification? Calcification is nothing. जो कैल्शियम है, जो गलत जगह पे जाके बैठ गया है, वो जहां जाना चाहिए वहां नहीं गया है, वहां पर जाके बैठ गया है. किडनी स्टोन हुआ है, कैटरैक्ट हुआ है, आर्टरीज में कैल्सिफिकेशन हुआ है. तो फॉर दैट यू नीड टू वेरी हेल्दी खाना चाहिए. अंडे बोलते हैं वेजिटेरियन, प्लीज ईट दैट. या स्पिनच है, उसमें K2 है. तो विटामिन विच इज नीडेड इज K2. K2 with D3 will help you to help your calcium to go back to the place where it should be. Okay, so please remember that कि cataract अगर है तो I'm not touching cholesterol and all those places because there are doctors. I am just a diploma holder. So cataract जो है, cataract के लिए you to save getting the cataract, पिस्ता जो मैंने बोला था, 10 pistachios, every youngster should start giving their senior citizens 10 pistachios every day. No roasted, no nuts should be roasted, salted, nothing. Tasty nahi hai, chalega. It should be helpful. Okay, at the end of the day, it should be helpful for you. So pistachios help you. Okay, the other thing is saunf. Saunf helps you to for your good vision. इलायची जो मैंने बोला था, इलायची helps. मैंने जो कॉफी में डाली थी वो it helps. So whenever long helps. Okay, so and then अंडा है, the vegetables, carrot है, of course. How do you forget beta carrot and carrot है? तो carrot useful होता है. Everything is useful. Colored vegetables है, you know, especially the yellow and orange. ये सब अपने आंखों के लिए अच्छा होता है. The plate should be colorful. Okay. So when you have your food, एक bottle में हम लोग मुखवास तो खाते हैं. So why? I mean, the older people knew much better than us, and how we are forgetting, you know. So मुखवास में सौंफ होनी चाहिए, जीरा होना चाहिए पचन के लिए, थोड़ी सी अजवाइन होनी चाहिए. जो भी पोर्शन है, let's say one measure of सौंफ लिया आपने, भून लिया उसको, फिर 1 portion of जीरा ले लिया, 1 portion of तिल ले लिया. तिल प्लीज खाइए, बिकॉज आपने दूध अगर बंद कर रहे तो कैल्शियम चाहिए, तो तिल ज्यादा अच्छा है. तो तिल ले लिया, तो तिल खाइए, भून के उसमें वो डाल दीजिए. एंड 1/4 portion ऑफ अजवाइन डाल दीजिए, जो हेल्प करता है पचने के लिए. नाउ व्हाट आई यूज इन दिस एक्स्ट्रा इज द लंबा ड्राई ग्रेटेड कोकोनट. ओके, for the taste, of course, and it's also useful. Extra oil, so उसको भी हल्का सा भूनती हूँ, उसमें डालती हूँ. And good, you get organic powdered good. ये सब ठंडा होने के बाद उसमें powdered good डाल दीजिए. It is very useful. It is very useful for your lungs, for your eyes, for your throat, for everything. हम लोग अभी कोविड से निकले हैं, तो you all know कि good was very important for your lungs. Okay, so ये आप उसमें डालिए and you eat it. But how? You take a teaspoon of that,
दूसरे bottle में you keep long and elaichi, and yeah, maybe in one bottle elaichi and one bottle long. उसमें से 2 long ले लिए और 2 इलायची, हरी इलायची ले ली, and then you eat, chew it and eat it. See what happens. Digestion के लिए it is very useful and you won't get acidity at all. धीरे धीरे कम हो जाएगी. गोलियां बंद कर दीजिए, क्योंकि गोलियां धीरे धीरे बंद कर दीजिए. I am not challenging any doctors over here, but जब गोलियां लगती है, medication लगती है, please go ahead with that. Okay, लेकिन along with that, you do this, the symptoms will slowly go away. Yeah, that means the doctors will also reduce your medications. Okay, so please do this and drink your water, 3 liters of water. If you are very acidic, if doctor is telling you that you are acidic, make an alkaline water. एक जग में, कांच के बॉटल में आपने पानी में let's 1.5 liter of water में आपने cucumber काट के डाल दिया and थोड़े पुदीना के पत्ते डाल दिए and नींबू के slices डाल दीजिए and 3-4 घंटे के लिए रख दीजिए. फिर दिन भर वो पानी पीजिए along with the other water. You have to take 3 liters of water, but you cannot have the whole water of this. नहीं तो body ज्यादा alkaline होती है. You need acid, as I said, you need acid to break down the food. Okay. So I think I'm clear with everything. Who is taking over now? So I think I'm done. That was an unusual after your 16-hour fasting. Yeah. I think you said you take melted ghee with coconut oil, some liquid stuff. What is the total quantity you imbibe? What is the total quantity? I told you 1 tablespoon of melted ghee. It should be 1 tablespoon of melted ghee. For me, if no one is a thyroid patient, please do not use coconut oil in that. But I use it to keep the levels normal. So I use 1 tablespoon of melted ghee. It's in Ayurveda. You use 1 tablespoon of melted ghee with 1 tablespoon of lemon or lime juice. It will help you to reduce the cholesterol also. Thank you. Thank you. Welcome. Anything else? Or yes, it's a very, very important and very useful talk, ma'am. Thank you. मैंने भी थोड़ा सा नेचुरोपैथी मैंने भी थोड़ा सा किया है. Yeah. तो मैं रिलेट कर सकती हूँ कि मतलब ठीक है, मैं उसमें टच में नहीं हूँ क्योंकि मैं आई एम नॉट ए प्रोफेशनल, बट स्टिल मैं इसको कोरिलेट कर सकती हूँ और मुझे बहुत सारी चीजें नई जानने को मिली. इट्स रियली थैंक यू सो मच. थैंक यू. हम फिर से कभी आपको दोबारा सुनना चाहेंगे, आगे भी कभी. Sure. Thank you so much. Thank you. There was a question in the chat box. I think you noticed it. Yeah, can you read it out? Can you read it out? Soaking rajma for 20 hours. They are the hardest pulses, and they have let's say phytic acid also, which is the bad nutrient. So you need to soak and you have to really make it light, because when you eat rajma and kabuli chana, I'm not talking about the kala chana, I'm talking about the kabuli chana. Yeah, chole, what you make. You see, you feel bloated, right? Have you noticed it? Yeah, slightly, yes. So that's the reason you need to soak it for a longer time, so you make it lighter. And mere soaking helps. That is what you feel. Yes. Soaking, sprouting helps. Okay. Yeah. So I guess we are done. Should I leave? Yes, ma'am, we can. Okay, thank you so much. Thank you. I forgot to thank you for your very nice and exhaustive and elaborate
Thank you. speech on good habits in eating. Yes, that was I'm very. sure you are already following, sir. Yeah. I'm sure you are already following. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you for giving me the opportunity. Thank you so much.